Hello children, how are you all? I hope you are fit and fine. Children, this is your maths video class, and as you all know, we have learned about patterns, and yesterday we have solved a chapter test that was based on patterns. Children, today we are going to start a new chapter, that is your 14 number chapter. The name of the chapter is data handling. So this is data handling or data handling, you can say. This is chapter number 14. Okay. So children, this is data handling. Chapter number 14. In this chapter, we are going to learn how to prepare a chart of anything, any object. So children, let's start our video. Okay. So first of all, we should know what are data handling. Data handling means you can say the objects are present in the number or in the pictograph, or on the basis of that you can understand this material in this quantity we are having. So it is the presentation of the object in a pictorial manner or numeral manner. So I will tell you in detail. Okay, so children, data means numerical, or you can say numerical information. Numerical information can be presented by in the form of first is tables. Okay. Second is, or you can write down, pictographs. And third is bar graphs. So there are three methods we can show the datas. So data, as you all know, that we have already seen in many companies and many you can say कई जगह आपको डेटा आपको चाहिए रहता है कि इसका डेटा कितना होगा, या कुछ भी अगर रिप्रेजेंट करना है किसी भी फर्म को या किसी भी सोसाइटी को अपनी चीज़ें, तो या अपने प्रोडक्ट और या अपने डॉक्यूमेंट्स, सो they are going to show by the data. Whatever the data they are having, the information about numerical information, you can say. Numerical information, it means it is presented in the numbers. Okay, in the numbers, or the complete information which is presented, the way they can present, that is called data handling, or data. So now numerical information can be presented by in the form of tables. Sometimes we have to show something, so we have to create a table. It means table means जैसे कि आपने एक टेबल बनाया कि आपकी पूरे स्कूल में, है ना, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं. ओके, जैसे कि हमें कभी कभी एज अ टीचर्स द मैनेजमेंट can be asked that how many girl child and the boy child are there in the school. So we just prepare a data or information about the numbers of girls and boys in the school. Okay, and if we are going to specify the age,
and the classes. So we have to create a table. Without table, we can't give the data in a proper manner. So tables are important. Tables means that we have to create columns accordingly. Okay. And the second way to present data, that is the pictographs. In the picture manner, if we want to show any data which can be asked by anyone, so we have to present in a pictograph. It means picture के form में भी हम data को present कर सकते हैं. Okay. Now the third one is the bar graph. Bar graph, you can know, you may know that bar graph is a like a bar, and there we are going to write the numbers or whatever the things are required. We can write in the columns, and it can be created by the scale or straight lines. These type of the thing, we just draw a column and we can create a bar graph. So these are the things will be presented in the form of the data. Okay, but the presentation must be in the tables, pictographs and bar graph. There are three types, the three ways. By these three ways we can present the data. Data handling, you can say. Data handling मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका, that is called data handling. Okay, so children, today we are going to see that how to create tables, how to create pictographs and how to create bar graphs. Okay, so tables, as you all know, we have already learned. So we just write down the thing and the price and the you can say the number of thing. Okay, so what is the, if अगर आपने कोई रिसिप्ट देखी होगी तो रिसिप्ट में आपने देखा होगा कि इतना ऑब्जेक्ट है, इतनी क्वांटिटी है और इतना इसका प्राइस है. तो सबका एक ऐसे ऐसे टेबल बना रहता है, और जब लास्ट में आप देखेंगे तो देयर यू कैन फाइंड the total amount of the money. So children, accordingly we can also create tables. Okay, and it can be on the computer, or we can draw the table in the copy also. Okay, and the pictograph, as I have already given the instruction, or you can say I have already given a concept of pictograph, that it can be showed by the pictures, and bar graph as we have already discussed. So children, I am going to tell you that tallies and about tallies and vertical bars, how can we create? Because we have to show the table, we have to show the data. So how can we create? So first of all, tallies. And vertical bars. Now children, tallies used for the numbers. Tallies used for the numbers. Tallies जो होते हैं वो numbers के लिए, tallies used for the numbers. Suppose it is written over here 1, 2, 3, 4 and 5 are we can write like this: 1, 2, 3, 4 and 5. So respectively. So here children, you can see tallies
used for the numbers. In the place of the numbers, we are using like this. 1, there is a lines that we can say that these things we can say these are the tallies. So 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. So tallies used for the numbers. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5 and like this. Okay, now let us study the how we can use this. Okay, children. Tallies and vertical bars. So children, if I will give you an example that Sumit has some toys in a box all mixed up. Okay. And he wants to know how many toys of each kind he has. As it is not easy to find out from the box, he spreads all the toys on the floor. अब सुमित जो कि एक लड़का है और उसका एक टॉय बॉक्स है. टॉय बॉक्स में उसके बहुत सारे टॉयज़ हैं और वो सब मिक्सड अप है. और ही wants to know that how many types of the toys he is having. So what he does, he spreads all the toys on the floor. Okay. So he counts them by using tallies as under. It means if the toys are there, so suppose there is a boat. Okay. There is a boat and balls and doll and car. The car is there. Suppose these 4 type of toys are there in the box, but we are not specifying that these type of the toys, but the number are not there. So the Sumit wants to count. सुमित चाहता है कि उसको काउंट करे कितने सारे बोर्ड्स हैं, कितनी सारी बॉल्स हैं, कितने सारी डॉल्स हैं, वो उसको काउंट करना चाहता है. काउंट करने के बाद उसको ये समझ में आएगा कि हाउ मैनी टॉयज एंड विच काइंड ऑफ टॉयज ही इज हैविंग. नाउ सपोज इफ वी आर गोइंग टू दिस इज tallies. Now here numbers. Okay. Numbers. Now here if we will draw a boat over here. Okay. Balls. Now a girl or a doll and a car. Okay. So here children you can see there are 4 type of toys he is having, Sumit is having. So if we will count from the box, box में हमने खोला सुमित के और उसको सुमित ने काउंट करना शुरू किया कि कितनी उसके पास बोट्स हैं, कितनी उसके पास बॉल्स हैं और कितनी उसके पास डॉल्स हैं और कितनी उसके पास कार्स हैं. तो what is the number? So in place of number he just wants to count it. 1, 2, 3, 4. Just we are counting when we are adding something. जब हम एक लाइन खींच के उसको काउंट करते हैं, वैसे ही उसने काउंट किया. Then he found that the boats he is having 5. Okay. So he counted 1, 2, 3, 4 and 5. Now ball he is having 4. Okay. Doll he is having 3 and car there are 6 cars. अब now उसको रिप्रेजेंट करने के लिए
How many cars are there? So there are there are 5 boards. There are 4 balls and 3 dolls and 6 cars. So here children, you can see the picture is already given over here. There is a boat. Okay. Now here ball, then doll and then car. So the tallies is also here, you can see. Okay children. Now with the help of this tally, he can show that how many toys he is having. Likewise, if we will talk about pictograph, so how can we show this? By the pictograph, we have to make a picture. पिक्चर बनानी पड़ेगी हर एक ऑब्जेक्ट की. अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक एक टॉय का पिक्चर यहाँ पे देखी और उसके अकॉर्डिंग आपने काउंट किया एंड व्हाट यू फाउंड दैट देयर आर 5 बोर्ड्स, 4 balls, 3 dolls and 6 cars in the box. यानी कितने सामान हैं ये आपने देख लिया कि पूरे बॉक्स में, सुमित के पूरे बॉक्स में जो टॉय बॉक्स था उसके अंदर इतने सारे सामान थे और इतनी नंबर्स में थे. सो अब इसके अंदर अगर आप पूछा जाएगा कि कितने टॉयज़ हैं तो सुमित कैन एबल टू गिव द आंसर करेक्टली एंड सुमित विल गिव दैट सुमित हैज़ 5 boards, 4 balls, 3 dolls and 6 cars, toy cars. So now here it is clear. Sumit has 5 boards, 4 balls, 3 dolls and 6 cars. और इससे पहले क्या था कि पूरे टॉय बॉक्स में वो मिली हुई थी. अब हमने इस टैली की मदद से और हेल्प से हम लोग ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया कि हाउ मेनी कार्स आर देयर, हाउ मेनी बोर्ड्स आर देयर, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू क्रिएट अ डेटा. अब उसको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको कोई बैठ के इधर उधर अलग करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज द डेटा इज़ क्रिएटेड बाय द number of the object. So that is how we can create data. This is called data handling by the help of the tallies and the numbers, okay, or vertical bars. We can create this table easily create हो गया. जब उसका मन करेगा सुमित का तब वो जाके देख लेगा कि हाँ मेरे पास इतने. अगर वो इसको अपने बॉक्स पे पेस्ट भी कर देता है तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा उसके लिए कि वो बस बॉक्स को देखेगा कि हाँ मेरे पास इतने हैं और इस तरह से वो कितने भी बॉक्स में जाकर अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकता है. कितने भी उसके पास टॉय बॉक्स हो, कितने भी उसके पास टूल बॉक्स हो, ही कैन क्रिएट डेटा ऑन द टॉप ऑफ दिस बॉक्स. सो विदाउट opening or without you can say searching something, he can able to give the answer that this object he is having in this amount और in this इतने ही उसके पास इतना सामान ये है और इतना सामान ये है. तो इस तरह से वो बहुत ही आराम से ईज़िली चीज़ों को बता सकता है. डेटा इज़ अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द objects. Okay, in very short you can give the information but the information must be correct. ये करेक्ट होती है. क्यों करेक्ट होती है? क्योंकि आपने सारा रिसर्च कर लिया है, आपने उसको सर्च करके सॉर्ट आउट कर लिया है. देन यू आर क्रिएटिंग अ डेटा कि दिस मच ऑब्जेक्ट द बॉय इज हैविंग. सो इसी को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. यानी कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपने सॉर्टेड कर लिया. सॉर्टेड करने के बाद आपने टैली बना ली और अब ये डेटा कहीं नहीं जाएगा. ये डेटा हमेशा हमेशा उस बच्चे के पास रहेगा जब तक कि वो उसका मिसयूज़ ना करे. इट मीन्स जैसे कि वो कोई सामान उसका खो जाता है तो ही जस्ट कट दैट
एक इरेज कर दे, सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं किसी भी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपने सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डेटा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. So if you are having this type of, if you have learned this type of data handling, so you can also make at your home about योर थिंग्स. इट मीन्स आपके जो आपके स्टेशनरी आइटम्स हैं, आपके पास एक बॉक्स है जिसमें ढेर सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं, यू कैन सेपरेट इट एंड काउंट इट एंड क्रिएट अ डेटा, एंड देन you can able to understand, you can able to give answer to anyone. I have 10 pencils, I have 12 pens, black pen, इतने जेल पेन हैं. तो इस तरह से करके आप उसको sorted out करके you can create a tally. So this is how we can make tallies. So children, in our next video we will learn about pictograph, because this is not new topic. This is not new for you, because you have already learned in your previous classes. Okay, so we are just revising it, that how much we have remembered this. So children, we will be continuing the same topic in our next video. So we will meet again. Till then, bye bye and take care of yourself.